हाय मिस्टर, यहाँ संक्षेप में है। आज मैं एक अमेरिकी थ्रिलर फिल्म द थिनिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। स्पॉइलर आदि हैं, सतर्क रहें और सावधान रहें। यह 2039 है और पृथ्वी जनसंख्या से अतिरिक्त हो गई है। मानव जाति मरने की कगार पर है। सयक तरशतरना भ्रषण कहा पर सब दशक परत वर्ष अपन जनस यक 5% कम करण हवे। और आदेशों के अनुसार संयुक्त राज्यों ने थिनिंग नामक एक नियम को लागू किया है। थिनिंग में छात्रों को एक मानकीकृत परीक्षा में भाग लेना होता है। हर सलक पर कशमा जब छतर फलहतः उस एक दवसस रक्षत करक मरदय जतः फलोमंद नम इकलस करपम शरहत राजा एक उच्च वदयलयक बच्चस इमन कटयकर देतर स इमन का समकरण का हल करन मपट नहीं हतः इसन ते वह नन सक क्षमत था और उस न कलती बाहर न कल था। जिस हस इमन उन हपहन था वह सब गणित समस्या के हल करन सक्षम है जतः इसक अल वहम प्रकस गवर्नर डेमर दबकबट एडवर्ड दब लिकर दबकबरम पर जय मलत हा वह रतम अपन भैसवा हर में कलत हा और अपन करम अपन परम का एक हर पर समलत बंद का अबल दनक परकशक बरमोबत करन लबत हा ये इस बरम बनत खबर की हाई हालक न बलक उस आश्वस्त करत हा कव पस हा जाके तब बंदक कपत का कर डाउन हाट हटलत हा और उन हटनक कर यलय मल्लजत हा दन बलक करतम चपक्स बाहर न कलन कलई नरशहाउन हल लबत हक लबलक प्रलय की एक वो चलन हा। यह परीक्षा का दिन है। अधिकांश छात्र विद्यालय की बाहर कतार में खड़े हो जाते हैं। उन्हें परोक्षकरण से पहल एक तवारस रक्ष जच से बजरन है तह बलकलनर से अपन अध्ययन लसक एक मौका करत हलक न उसक पर सनह हतः लेना और उसकी दोस्त केरेन वुड्स अंदर जाने के लिए लाइन में खड़े हो जाते हैं। एक छात्र के बाजू पर लिखी पत्रिकाएं होती हैं। जब उसे पकड़ा जाता है तो वह भागने की कोशिश करता है। गर दस उस पकड़ लता कसना अब तक पर कश बचन या उस पर छल करन म सफल न हा वदर यलय का अदर बलका और ए पर का शाह लमफत मबरम लथा और जल दह पर का शशरहता। उन्हें परीक्षा पूरी करने के लिए 2 घंटे होते हैं। सब अपन तवायत पर समस्या ए हल करन लगत हा लम सब कई समस्या को बन्ना हल कर लता और सबस पहन इस पर करत हा। उसका दोस्त केरेन संघर्ष कर रहा है। परीक्षा समाप्त होते ही वे तुरंत नतीजे प्राप्त करते हैं। कक्षा में शिक्षक एकाधिक नाम बुला रहे हैं जो परीक्षा में फेल हुए हैं। छात्रों को चिंता होती है, उम्मीद होती है कि यह जल्दी से खत्म हो जाएगा। जो भी फेल होते हैं उन्हें दार्स ले जाते हैं। वे रोते हैं, दार्स का सामना करते हैं और कुछ लोग भागने की कोशिश भी करते हैं। दार्स उन छात्रों को पीटते हैं जो संघर्ष करते हैं। धन्यवाद लीना, केलेन और ब्लेक पास हो जाते हैं। हलक अतम प्रश्न म बलक का परमक एक शकशक दवा रबन ये जतः तबरदस उस लजतः उसने जल्दी अपने पिता को फोन किया और उनसे मदद मांगी। हालांकि उनके पिता को सहमति नहीं होती। कहते हैं कि कानून सबके लिए एक समान है। पर शनाह कर वह अपल वचन का शिष्य करत हा वह गरदस पर हमल करत हा और कलम सभागन पर कहत हलक न पई फयद न हता कोई भी नहीं बच सकेगा। ब्लेक एरी की मदद करने की कोशिश करता रहता है लेकिन उसके पास कुछ और नहीं होता। अब एक सलबदहा और थन्ना तो पर कश रहा न 24 घट पहल और यह लन्ना का छट बहन कर तक पहल थन्ना पर कश दरवाजा घंटी बजती है। यह लन्ना का शुक शुक मसवर जहां जनना और कर कक मकमत यक बदस उन्हा खदा का बच्चे पर तह दखब लपे वह हवहम हशित करन पर कुछ करत हा यक कल कल पहल पर कश हलक नवह उन्हा यह आश्वस्त करत हा सब ठकहबे। इस दौरान जेक अपने कमरे में एक वीडियो रिकॉर्ड करता है। उलट के दहा तहा कवह पर कश सब गलत जब बलखत कश तशत एक समक्ष खई जसत लीना करंट को प्री स्कूल में छोड़ देती है। करंट कक्षा में जाती है। वही वीडियो एनिमेशन प्रदर्शित होता है जो पृथ्वी की वर्तमान स्थिति दिखाता है। इसलिए सभी देश अपनी जनसंख्या को प्रतिवर्ष 5% कम करने के नियम लागू करते हैं। कक्ष दशना एक बच्चे का परवर्ष करम का अनुमत दहा जबत छना पर न पड़ कमर दया हलक अम्र का मुसरक रन पे को यह कवल सबस बदधम न दक बच यज एक और बक कमर दय जते यह बच्चा भत इस बतक व्यवस्था न हत इसक बद बच्चा का परक शशर हतः उनक शक शक बठ जपहा और क यक कछ बच्चा मर दे जाए दधन यव द बच्चा पसह जतहा। बाद में और केलेन अपनी परीक्षा के लिए विद्यालय में जाते हैं। परीक्षा शुरू होती है और जल्दी समाप्त होती है। इसी बीच गवर्नर डीन ब्लेक के रिकॉर्डिंग और उनके उत्तेजित होते हैं। उन्हा न पर कश परबधप मसन पर फनक यहाँ और उन्हा वल्ल का कपसकरण का आद शदयहा उलक अक बवजद मसन न उसक अक कलनक सफ बदलदा य जसस न फलहा जतहा पर कशकनत ज आप हलक न सबक सरा प्रतिसहतः कलनक नम भ बलय जतहा उसम पर कश फलकर दह मसबर जगर दस करत हपे कवाप उस अपन सबस्ता छछतर बत्तहा और परन लमक छबे बरहसतत है। हालांकि नतीजे अंतिम होते हैं और उन्हें बदला नहीं जा सकता। उसे बाद में की कार मिलता है ताकि वह दरवाजों को खोल सके और भाग सके। ब्लेक को परेशानी होती है कि उसने फेल नहीं किया। वह नवलक्षतर अपन नत जग सथा एक सकल परटम पे चफत और दहिनेन सभा अम्रक करश करपक बनन का घशन करम तरपर भशम दरहा। उन्होंने अपनी शिक्षा प्रणाली की प्रशंसा की है और पर नमस वर पर उन्हना 196 अधिक दशम शक शुमसर वश्रश ठाहन्ना का कमय बहस लकयः
96 countries. The crime rate is decreasing by 26%. Blake listens to his father's speech while at the party, then sneaks out of it. He sneaks into the hallway and beats one of the guards. He then goes into the control room. Meanwhile, Mina and the students who have failed are taken into a room and put against the wall. They are forced to remove all of their clothing for decontamination. Then Lena and the others are taken to a room where the guards are about to execute them by lethal injection. Suddenly Blade cuts the electricity off, making the whole school go dark. Taking this chance, the students who are about to be executed free themselves and try to run away. But none of them succeeds except for Lena. She uses the key card her teacher had given her and gets out of the room. Soon after, Mason comes to the room and asks for a head count. They find out that Lena is missing and start looking for her. Lake finds Lana and helps her fighting one of the guards. While talking, they realize that something was done to Blake and lying to results. They both enter into a vent and hide. They follow the network cables to go to the server room where they can look at the results through the computer. Meanwhile, the school is still incomplete, locked down due to the power failure. The news gets outside is being broadcasted all over the state. The parents outside are getting concerned. Governor Dean calls Mason to ask him about this situation. Meanwhile, the vents below Blake breaks, making him fall into the swimming pool below. Lana jumps after him. She brings him out of the water, but he is not breathing. Lana gives him CPR and somehow manages to save them. Blake and Lana change to some clothes they find in the poles. Lockers then continue to go through the vents and reach the server room. But the guard stands in front of the door. Moreover, Line's key card falls down the vent in front of the guard. He doesn't notice the card, but now she has to get it back somehow. Her plan is to go to the science lab and join a string with a magnet to fish the key through the vent, so they head down to the lab to retrieve the equipment needed. However, in the lab they make a slight noise causing the guard to approach the lab. They quickly try to escape level managers to get back to the vents, but Blake is stuck hiding in the lab. Lena moves through it to fish the keys. She successfully manages to get it up halfway when suddenly a guard catches it. But it turns out that it is Blake disguising as the guard he had beat in the garden put his clothes on. Surely the guard the two of them had attacked earlier tells Mason about them. He reveals that Lena had a key card with her. Mason gathers all the teachers together, suspecting that someone has given it to their students. When Miss Bridge is in the room with other teachers, she forces with another teacher and manages to take his key card. Mason continues checking the teachers for their key cards and ID cards. Versa saves herself by showing them the card. Since the other teacher doesn't have his, Mason threatens him to tell them where Lena is. However, he insists he doesn't know anything. As Mason beats SIM, Lena finally gets to the server room. She opens the computer using the key card, but Mason hasn't protected with the password. She then texts Kellen, who is good at hacking, to provide her with the access. After some time, Colin receives Lonnie's text. He helps her to get through Mason's computer. Later then searches for her results and finds out she got 98% but still failed while Blake got 15% in passed. She does more research and finds out that I too had gotten 88% in failed while others who had less marks in her passed. Lana realizes that the grading system is rigged and the governor has been failing whoever he wishes to. Lena sends a file with the rigged grades to Kelvin, but soon the power is back on and Mason sees that she is in the server room. Later realizes this and runs out. However, Mason catches her almost immediately. Blake, on the other hand, is still in disguise. He is with the students who have failed. He orders the guard to take them to the recreational hall with the other students, but the guard refuses, so they get into a fight. The guards restrain him and find out his identity. Just then Kellen receives Lane's message and is surprised to see the rig results. Kellen's friends with the news ender, so he quickly emails it to the news channel. The reports broadcast the news show in the receipts of the altercation and the results. After the photos are leaked, the governor is called by his party head, who threatens to take his presidential candidacy back. Unwilling to let that happen, Dean Reading throws all the accusations at Mason and threatens that he is innocent. He tries to prove this, so he has no choice but to execute all of those who actually failed, including his own son, Blake. At the school, Mason and guards take longer to the dining room to execute her and the others. Blake is there too. Mason calls Dean to ask him if they should proceed to execute the students, but Dean tells him to stop. He wants the students who have actually failed to be executed, including his own son. The guards free Lana and other students who have actually passed the test. Lena kisses Blake, but the guards take him in, the rest who have failed. They execute them by injecting them with a drug. As the lockdown ends, Lana is reunited with her younger sister Farin and Miss Bridge cut to.
A few hours later, we see the bodies of the executed students being taken underground in an elevator. The students start to move, revealing that the drug they were injected to be a sleeping drug. They stop when they reach a factory-like place. It is filled with goods being produced by the tech company Azure Global. Many people work in the factory just then. Blake is surprised to notice that one of them is actually Ellie, his girlfriend. This indicates that the students who are supposed to be executed are actually brought underground to work as slaves for a multi-million company. This was all planned by the government as a strategy to get free labor. Subscribe for more videos like this, turn on notifications and leave it like to help the channel out. Thank you for watching.